टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ट्रांजिशन ऑफ डक्टाइल। अब इसी का जो कंसेप्ट है ये हमारे इसमें भी लगा था, जिसका नाम है, जो हमारा टाइटैनिक डूबा था, तो ये कंसेप्ट वहाँ से भी कुछ कुछ आया है। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ट्रांजिशन ऑफ डक्टाइल मटेरियल इनटू ब्रिटल टेक्स प्लेस। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ टाइटैनिक शिप। तो जब भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, क्रैक इनिशिएट होता है नियर द शार्प कॉर्नर आफ्टर सम टाइम, प्रॉपरली स्प्रेड अराउंड द इंटायर गर्थ और डेप्थ एंड फाइनली फ्रैक्चर। बाय अप्लाइंग हेवी हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, ट्रांजिशन is from brittle to ductile. When pressurized stress is not sufficient to initiate cracks, that time for initiation stress is substantially increased by deformation. So जब भी हम by applying heavy hydrostatic compression, transition is from brittle to ductile, ठीक है. When pressurized stress is not sufficient to initiate cracks, that time for initiation stress is substantially increased by deformation. So chromium, which is normally brittle, shows high ductility when 10 to the power 4 atmospheric pressure is applied. Since ductility brittleness changes with temperature, pressure show not absolute property of material. Bushinger's effect: when tensile load is applied, steel is deformed elastically and then plastically. When direction of load is reversed, so when tensile load is applied, steel is deformed elastically and then plastically. When direction of load is reversed, some decrease in strength is observed because dislocation movement starts at lower strength. These all explained by Bushinger's. Effect of temperature and pressure used in machine designing. By decrease in temperature, transition of ductile material into brittle takes. Due to temperature decrease, crack initiate होते near sharp corner, after some time properly spread around the girth, depth and finally fracture. By applying heavy hydrostatic compression, transition from brittle to ductile. Since when pressurized stress is not sufficient to initiate crack, that time for initiation stress is subsequently increased and deformation. क्रोमियम नॉर्मली ब्रिटल 10⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई होता है तो डक्टाइल प्रॉपर्टी शोज कर देता है. सो ये है बुशिंगर्स इफेक्ट, जिसमें टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट तक लगता है, रिवर्सल ऑफ रोड होता है तो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है. ब्रिटल बिकॉज पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन वेरी लेस, नॉन लीनियर इलास्टिक ब्रिटल, माइल्ड स्टील, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, टेनेसिटी ज़्यादा, रेट ऑफ फ्रैक्चर अगेंस्ट टेंसाइल लोड मोर, टेनेसिटी मोर. कंपैरिजन ऑफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन. रबर का जो स्ट्रेस सबसे लो है, फिर कंक्रीट, कॉक, वुड, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील. माइल्ड स्टील का 2.1 into 10⁵ मेगा पास्कल. Young's modulus of cast iron half E mild steel. Time required to get back is less for mild steel and more for elastic limit point. Aluminium is nearly 1/3 of E mild steel. Cast iron can nearly equal to half mild steel. Aluminium nearly equal to 1/3 mild steel. And E of concrete depends on grade 1/10 to 1/25 E of mild steel. Differential form of strain. A elastic member in which consider a point on 3D body having coordinate. A three-dimensional body having coordinate of point P, X, Y, Z. When load is applied, elastic deformation in X, Y and Z direction are U, V, W respectively. So एक three-dimensional body है जिसका coordinate है X, Y, Z. Load is applied, elastic deformation in X, Y, Z directions हुए U, V, W, then normal and shear strain will be normal strain in X del U by del X, normal strain Y del U, V by del Y, normal strain del W by del Z. Shear strain in XY del shear strain in XY dV by dx plus du by dy.
shear strain in YZ, dw by dy, dv by dz. Shear strain in xz, dw by del dx plus du by dz. Tenicity is the property which provides resistance to fracture under tensile loading. More ultimate tensile strength, more tenicity. Why steel is used in structural engineering?